Hello and welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. I'm Hina Gambhir. Viewers, in a significant ruling, the Madhya Pradesh High Court has recognized the disputed Bhojshala complex as a temple dedicated to goddess Vagdevi or Saraswati. The Indore bench observed that Hindu worship at the site has continued over time and was never extinguished. The court also noted that historical records and literature establish Bhojshala as a center of Sanskrit learning linked to Raja Bhoj and pointed to the existence of a Saraswati temple at the site. The High Court further said the Government of India may consider bringing back the idol of goddess Vagdevi from the British Museum in London. So this is the big story that we are tracking for you right now. We have with us Mithun Vijay Kumar, who's a political analyst, joining us live. Ayaz Ahmed, who's a political analyst. Also joining us live is my colleague Pranesh. Pranesh, a big development there from Madhya Pradesh High Court. You know, there was a campaign, Hina, to liberate the Bhojshala complex. The name comes from the person who got this made, Raja Bhoj, as he's popularly known as the king who was considered a patron of art and learning, and he made this Saraswati temple. Saraswati, as you know, is goddess of learning in Hinduism, in Sanatan. So from 11th century complex that came to be known as Bhojshala to present day dispute, so much has happened. And in 2024, a scientific survey of the ASI had lent credence to the claims made by the Hindu side that this is indeed a temple complex. Now with this clear ruling by the High Court, Indore bench of the High Court, it stands settled. Obviously, someone was saying that the Muslim side can obviously go up in appeal in Supreme Court, but we will have to see when that happens. But if you just sample the commentary from 2024 when the report came out, many people were of the opinion that this is the BJP government in state and center trying to use its muscle, misusing the ASI to change the character of the Bhojshala complex. All of that stands demolished because this is the court saying that this is indeed the temple complex of Vagdevi, which is goddess Saraswati. Right, stay on with us, Pranesh. Let me go across to my colleague Shivam as well, who's joining us live right now from Madhya Pradesh. Okay, we have some big breaking news, viewers, coming in at this point in time. What we have learned is that the Muslim side is likely to approach the Supreme Court. This is the big news that we are getting for you after High Court declares complex a temple. The Muslim side is likely to move Supreme Court. Let me go across to my colleague Shivam for more on this. Shivam, big development there. The Muslim side is likely to approach the apex court now. Well, exactly, Hina, the Muslim side, which comprises of the caretaker of this particular Kamal Mosque, basically you're arguing in the court, in the High Court as well, on the findings. Shivam, I'm just interrupting you there. Please stay on with us. We have Asim Wakar of AIMIM joining us on the broadcast as well. Good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. Your first reaction to what happened in Madhya Pradesh today, how the High Court declared Bhojshala a temple. तो देखिए, केस चल रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन मेरे पास भी अभी खबर आई है। पूरी जानकारी लेने के बाद, डिटेल्स के आ जाने के बाद मैं इस पर कोई भी रिएक्शन दूंगा। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो खबर मिली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ है। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये गॉडेस सरस्वती का टेंपल है। हिंदूज यहां पर पूजा कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में नमाज की परमिशन जो है अब वो ले ली गई है। अब नमाज यहां पर अलाउ नहीं की जाएगी और एएसआई की जो 2003 की रूलिंग थी, नाउ दैट स्टैंड्स इनइफेक्टिव। ये हुआ है आज हाई कोर्ट में। इनको सुनने के बाद आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? फिर मैंने आपसे कह दिया कि पूरी रूलिंग अभी मैंने पढ़ी नहीं है। पूरी रूलिंग जो आई है, जो भी आदेश आया, उसको पढ़ने के बाद और वहां के लोकल से बात करने के बाद ही इस पर कुछ कहना मुमकिन हो सकता है। थैंक यू। Okay, thank you very much, Syed Asim Wakar. Appreciate you speaking with us here on Times Now. So, Pranesh, you heard, I mean, we are still waiting for reactions on this big story. But obviously, things are settling down, Hina, but let me quickly make one point. You must have seen the first reaction of Mr. Asaduddin Owaisi, the AIMIM chief. And what he says is, disturbing on
on more than one count. He's linked this to Babri. And you remember what Owaisi had said after the Ayodhya verdict. He said that this is a black day for judiciary. Now he says we hope the Supreme Court will set this right and overturn the order. Glaring similarities with the Babri Masjid judgment. This is problematic, like I said, on many counts. So I will wait for your political parties to weigh in how they see this reaction from Mr. Owaisi. But just to put this in context for all the viewers who are watching this broadcast right now, what has happened? This was a lengthy court battle. After the inflection point, so to say, was the ASI scientific survey report that was voluminous. I think it ran into more than 2,000 pages, 2,181, if I'm not wrong with the number. So when you have a voluminous, document to go through, which is why the courts took time. This was a division bench, 2 judges. I remember, and I'm open to correction, 1 judge also went to personally inspect the site. So this ruling is not, out of thin air. A lot of work has gone into it, like it happens in other cases. But Right. just the fact that this has been a lengthy dispute from the time that it was constructed in 11th century to 2026. Right. Many things have been said and written, and which is why there was a dispute. But obviously the Muslim side can approach the Supreme Court. The Constitution Right. gives them the right. But to inject Babri, etc. is not right. It's a disservice to the judicial system we have. Absolutely. Since you spoke about Asaduddin Owaisi, let's quickly tell our viewers what exactly he said on X. And we are also joined on the broadcast by Rashid Alvi of the Congress Party. Mr. Rashid Alvi, good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. I just want to quickly tell our viewers what Mr. Owaisi has said, then I'll come to you for your reaction. Now, he has put out on X saying, we hope the Supreme Court will set this right and overturn this order. Glaring similarities with the Babri Masjid judgment. So this is the first reaction of AIMIM chief Asaduddin Owaisi. Mr. Rashid Alvi, to you now. Your first reaction on what happened in the High Court today, the big decision that has come in on Bhojshala. I have respect for any judgment given by any High Court or District Court or Supreme Court. But important thing is, what will happen to the Worship Act, which was passed by the Parliament? No judiciary, no High Court, nobody taking into consideration a Worship Act. Whether now, if BJP is ruling over the country, whether they have any kind of influence over judiciary also, what will happen of that Worship Act? Worship Act is specifically said, status quo will continue what it was in 1947 except Babri Mosque. And now from every corner news are coming. Dispute of Mandir, dispute of Masjid. Worship Act is only for this purpose. There should be no Masjid, Mandir dispute at all in the country. So there should be no hatredness in the country. But I am unable to understand why our judicial system doesn't consider Worship Act. So it is very unfortunate, and because BJP is ruling not only over the country but in so many states, and it is happening everywhere. In Uttar Pradesh, some news coming from Banaras, sometimes from Sambhal, sometimes from other places, all disputes between Masjid and Mandir. Whether I have something to say here. Mr. Rashid Alvi ji is talking about the Places of Worship Act, Hina, and if you see Section 43A, your viewers can Google this. Section 43A explicitly exempts, and let me read this: any place of worship that is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains, the AMASR Act 1958. So there are exceptions. So it is not, what Mr. Alvi would have us believe. And even if what he's saying is right, what happens to the Worship Act, etc., for that we have the courts to adjudicate. We are no one to, like he's saying, imputing motive, etc. There's the BJP controlled judiciary, etc. I think let's be restrained and responsible in our commentary. Rashid Alvi ji, मैंने जो exception पढ़ा है, वो exist करता है, sir. वो act का part है.
Hello. Hello. Yes. I do not want to be part of any dialogue, but what is the definition of this? No, I understand, sir. Okay, then Listen to me first. no, sir, Mr. Alvi, What is don't it you are intervening? One minute, sir. I one have minute. noticed. Harishankar I Jain. didn't. Harishankar Jain is also joining us, and please listen to him. He is an authority on law. He will tell us. Mr. Jain, Rashid Alvi of the Congress Party, वो ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या फायदा अगर आप हर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का कैरेक्टर आप चेंज कर देंगे तो। मैं समझता हूँ अलवी साहब को कानून पढ़ने की जरूरत है। अलवी साहब ने कानून नहीं पढ़ा है, खाली भाषण देते हैं। तो उसी एक्ट में लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एडमिटेडली ये एएसआई एक्ट से गवर्न है, यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, मंदिर तोड़कर उसके ऊपर तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया था, ये बात आज साबित हो गई है एसआई रिपोर्ट से, हिस्टोरिकल एविडेंस से, आर्कोलॉजिकल एविडेंस से, और सारे एविडेंस इस बात को चीख चीख के कह रही है कि केवल वो मंदिर है। और यही नहीं, ऐसी राशिद साहब हो कोई साहब हो, सुन लीजिए, जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं एक एक को हम वापस लेंगे, ये हमने कसम खाई है, ये हमारा प्रण है। कोई मंदिर छोड़ेंगे नहीं। और मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा तो फैसला होगा। विष्णु शंकर जैन जी, राशिद अलवी की तो बात हो गई। असादुद्दीन ओवैसी उन्होंने एक प्रतिक्रिया कही है, हिना अभी आपको पढ़ के सुना देंगी। हरिशंकर जैन जी, वो ओवैसी जी क्या कह रहे हैं वो हिना आपको बताएंगी। जी हरिशंकर जैन जी, असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमएम के चीफ है, उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करेंगे और इस ऑर्डर को ओवरटर्न करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जो आज फैसला सुनाया गया है उसमें बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था उससे काफी सिमिलैरिटीज हैं। आप किस तरह से देखते हैं? उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न करेगा और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगा और भी कहेगा कि इतने दिन तक जो जबरदस्ती कब्जा किया गया था उसको मुआवजा दें दो। लेकिन आप बाबरी से जो कंपैरिजन अभी किया जा रहा है उसे किस तरह से देखते हैं? ये कंपैरिजन नहीं होता कहीं भी। हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं, अपने एविडेंसेज हैं। जो बाबरी मस्जिद केस में, मैं बाबरी मस्जिद नहीं कहता, वो तो एक मिथक की बात है। श्री राम जन्म जो मंदिर था, वो जो केस हुआ है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि एक मंदिर टूट जाए तो मंदिर टूट जाने से वो डिविनिटी खत्म नहीं हो जाती, कंटिन्यूज टू बी टेम्पल। वो कोर्ट ने माना है। एसआई रिपोर्ट कि क्या लीगल वैल्यू है उसको कोर्ट ने माना है। बहुत साउंड ग्राउंड पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हो कि हिलेगा नहीं, जजमेंट यही रहेगा। बल्कि हम डिमांड करेंगे कि इन लोगों ने इतने दिनों तक जो है मंदिर चेक कर वहां पर हमको पूजा नहीं करने दी, उसका मुआवजा दें और नुकसान दें। जी हरिशंकर जैन जी, thank you very much for speaking with us here on Times Now. We have a couple of reactions as well that we have lined up for our viewers. Listen in. गौशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।
हमने अपनी याचिका में इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है जो म्यूजियम में रखी है माता वाग्देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। So you heard the reactions that have come in. My colleague Shivam continues to be with us. We're also joined on the broadcast by Ayaz Ahmed, who's a political analyst. I'll come to both of you in just a bit. We have to slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.